So hello everyone. Today we are going to see about the typedef in C programming. After that, what do you mean by typecasting in C programming? What are the different types of typecasting? And at last, we will see what do you mean by bit fill. In the previous video, we have already gone through the different topics related to your fine handling as well as command line arguments. We have gone through the program. We have see how to pass the argument with the main functions also. Now today we will see first what do you mean by type def. First of all, we will see type def. After that, we will see typecasting, and after that, bit fill. So basically what it means that type def. So type def is a keyword. Type def is a keyword used in C programming to provide some meaningful names to the already existing variable in the C program. Normally what happens, suppose if you want to declare one variable, suppose if you have declared integer a, it means that a is a variable of integer type. Suppose if you have declared some other variable, character b, so b is a variable of type character. But suppose if you want to give some alias name to the existing variable, it means that integer, it is already a reserved word. Integer int, it is a reserved word. You cannot change the writing methodologies and meaning of that particular thing. But suppose if you want to use, instead of integer, you have to give a some other name. In normal practice, what we will use integer integer data type. Integer a is a variable of integer type. But instead of integer e, if you want to give some other name, so that type of things are happened with a type def keyword. So basically type def keyword which is used to give a alias name to the existing variables. Alias name to the existing variable. It behaves similarly as we define the alias for the command. In short, we can say that this keyword is used to redefine the name of any already existing variable. So how we are going to use a type def? What is the syntax by using a type def? Okay. So how we will use a type def? So you have to write down the type def, typedef type def, existing name. Existing name can be anything, integer, character, float, double, long, whatever. And alias name. That means instead of existing name, now what type of alias name you are going to use in your program? That means suppose your existing name is integer and suppose alias name is suppose unit. It means that unit is a type of integer. That means instead of integer, you are going to use a unit. That means for example, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है type def unsigned int unit. It means that you are using the new alias name known as unit. What alias name you are going to use? Unit. You are using unit. Just a sec. You are using unit. Your alias name is unit. You are going to use a unit instead of unsigned int. That means whenever you are going to declare a variable of unit type, it means that unit represent a unsigned int data type. It means that normally suppose if you are not using type def, अगर आपने टाइप डेफ यूज नहीं किया है तो नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप नेम लिखते हैं, आफ्टर दैट देयर इज एन वेरिएबल नेम. So unsigned int space unit. So unit is a variable of unsigned int data type. But now suppose if you want to use unsigned int, instead of unsigned int you have to use some other name. Okay, so suppose if you're using type def, अगर आप type def use करते हो, so it means that unsigned int unit, so that unit is a new alias name for unsigned int. That means instead of unsigned int you are going to use unit. So unit represent a data type. That means you can see in the below example. So here you are writing unit a comma b.
unit A comma B. So A and B, these are the two variable of type unit. And what is unit? Unit is nothing but a unsigned int data type. That means what you are going to do, you are going to change the existing data type name. That means unsigned int के जगह आप ये जो unsigned int जो है उसका आपने नाम चेंज किया, उसका नाम आपने क्या लिखा? यूनिट लिखा. You can give your name also. Suppose if you are writing type def, if suppose आपने ऐसे कुछ लिखा है type def integer integer space ram, semicolon से terminate कर दिया. So what it means? Ram is a name. Ram is a alias name for integer. Integer के लिए you are not going to use integer int int. Instead of int you are using ram. ठीक है? It is possible with the help of typedef keyword. So typedef keyword is used to give a alias name to the existing variable. Okay, that means instead of integer, now what you are going to use? You are going to use the ram. Suppose now if I return ram a, so it means that a is a variable of ram type. So ram क्या है? Ram is nothing but your integer data type. Got the concepts? So typedef is a keyword which is used to provide the different name, or we can say alias name, to the existing variables. It means that suppose now some other example, suppose if you have written typedef float b, and after that you have created the variable b space x. So x is a variable of type b और b क्या है आपका? एक alias name है for float. Got the point? It means that with the help of typedef, you are going to change the name. Okay. Now, instead of integer, you can write down the ram. That means integer को आपने किससे replace कर दिया? ram से. So ram is the variable. Ram is the data type which representing the integer data type. You can create the variable with the help of ram. That means if you are writing ram a comma b, so A and B, these are the two variable of type ram, and ram किसको represent कर रहा है? ram integer को represent कर रहा है. That means instead of integer, what name you are going to use? You are going to use a new name that is known as ram. So whatever name you are going to assign, or whatever alias name you are going to assign to the existing variable name with the help of typedef method. That means typedef के थ्रू आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप्स का जो है नाम, एग्जिस्टिंग नाम, आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है? लाइक कैरेक्टर है, इफ यू वांट टू यूज अ कैरेक्टर, इफ यू डोंट वांट टू यूज अ कैरेक्टर, CHAR आपको यूज नहीं करना. इंस्टेड ऑफ CHAR, इफ यू वांट टू यूज सम अदर नेम, so you can, it is possible with the help of typedef. So that is the use of typedef. After that, we'll see one simple example. Now, typedef unsigned int unit. So we have created a new name unit of a type integer. So for integer के लिए हमने unit create किया हुआ है. Now you have written unit I comma j. So I and j, these are the two variables of type unit. और unit क्या है? Unit हमारा integer है. Okay. So I and j, these are the two variables of type unit, and unit representing the integer data type. Now I is equal to 10, j is equal to 20. After that, value of I is I, आपने I का value display कर दिया. After that, value of j is j and return 0. Finally आपका program end हो जाएगा. इसका output फिर आपको क्या मिलेगा? Value of I is 10 and value of j is 20. So what we have written? So आपने integer जो int int था उसका आपने नाम क्या change कर दिया? Unit. और unit use करके आपने क्या किया? Variables को create किया है. Okay, got the point? Now we'll see typedef with a structure. जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ typedef यूज करते हैं, एट द सेम टाइम वी कैन यूज typedef with a structure and union also. For example, suppose if you have created a structure of student, struct always start with the struct keyword followed by the structure name. You have created one structure with the name student, and under this student we are having two member variable, one is character name and another is age. You have created one structure with the two data members or two members. After that, what you have written?
struct student s1. That means you have created the s1 variable for student. और student क्या है? Student एक structure है. Normally we have to create a structure. We are going to create the structure. हम लोगों ने structure create किया, and after that if you want to use that structure variable, so you have to create a structure variable. If you want to use the structure members, you have to create a structure variable. That means s1 is a variable of type structure, और student क्या है? ये structure है. Now if you want to change the name, that means now suppose here. Now suppose if you have created a structure of student here, ये आपने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव रिटन इन बिलो लाइन, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूड, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूड. तो स्टूड is a alias name to the student. That means student is one of the structure. For instead of student, if you don't want to use a student, you have to use some other name. So instead of student, what you are going to use now? You are going to use a student. Student ka stud, stud, you have written stud. Okay. So now suppose if I return stud s1, stud s1 सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया. So that s1 is nothing but a structure variable of stud type, and that stud is nothing but a student. So आपने सिर्फ नाम चेंज किया था. Instead of student, what name you are going to use? You are going to use a stud. Instead of student, आप स्टूडेंट से स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट न करते हुए आप ये अलाइज नेम, जो नया नाम आपने दिया स्टूड, जरूरी नहीं है स्टूड, आप सपोज यहाँ पे कोई राम नाम दे दो. सपोज इफ यू हैव गिवन राम, so you can create the structure variable with the ram. Suppose आपने stud की जगह राम लिख दिया, it means that you have written ram r. So it means that r is a variable of type ram, and ram is nothing but of student. That means ram is nothing but your structure name. Okay, so r is a structure variable. फिर structure variable जब हम create करते हैं, so every structure variable is having a individual data members which is having, or the memory will be allocated for every structure variable is a different. That means अगर राम का r आपने create किया तो राम में एक name के लिए space रहेगा, तो एक age के लिए space रहेगा. Likewise, तो जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, वैसे ही we can change the name of the structure also. Okay, so type def, which is used to change the existing variable name for structure, for normal variable as well as for structure. Now we will see a typecasting. It's a very important topic, typecasting. So it is another feature of C programming which provide the concept of typecasting. So basically what it means, a typecasting. So typecasting is nothing but converting one data type into the another is known as typecasting or type conversion. Suppose if you are having a one particular data in one data type, suppose if you are having an integer data type, you have created a variable for suppose integer a. But if during the processing, if you want to change the data type of a, that means suppose if you have written integer a, you have created a variable of a. That means you have created a variable a of integer type. But during the process, during the execution, if you want to change the data type of a, that means now the data type a is integer. A का data type क्या है? Integer है. A का data type integer है. But during the process, if you want to change the data type of a, आपको a का data type float करना है, a का data type आपको character करना है, फिर character to float करना है, character to integer करना है, and vice versa. If you want to change the one kind of data type into the another, this process is known as typecasting. एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप पे कन्वर्ट करना known as an type conversion or typecasting. It is one of the features provided by procedural oriented programming or C programming language. Okay, so there are two types of typecasting. One is implicit typecasting and another is explicit typecasting. दो टाइप्स के कास्टिंग होते हैं, दो टाइप्स के टाइपकास्टिंग होते हैं. वन इज implicit typecasting and another is explicit typecasting.
So first of all, we will see implicit typecasting or type conversion. So implicit typecasting is a type conversion in which the compiler will do the conversion automatically according to the program whatever you have written. There is no necessity of explicitly you have to put any cast operator for converting one data type into the another. Implicit का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू वट एवर इंस्ट्रक्शंस यू हैव रिटन under that particular program. So implicit typecasting will automatically convert your one data type into the another. That means your compiler will take the decision at the time of compilation or at the time of execution of your program. The one data type is converted into the another. That means the implicit typecasting. That means it is automatically converted. Implicit, the data type, one data type is converted into the another data type. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने इंटीजर a इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है. विल सी वन मोर एग्जांपल्स आल्सो. नाउ सपोज यहां पे इंटीजर a इज इक्वल टू यू हैव रिटन 25. व्हाट यू हैव रिटन 25. आपने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 25. दैट मींस 25 इज स्टोर्ड इनटू द a वेरिएबल. बट आपने डिस्प्ले करते समय व्हेन इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a, आपने इसका वैल्यू डिस्प्ले किया है फ्लोट में. आपने इसका वैल्यू डिस्प्ले करते समय आपने फ्लोट में डिस्प्ले किया, %f लिखा है आपने. आपने डिक्लेयर करते समय a is equals to 25 लिखा है. बट एट द टाइम ऑफ सपोज इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a और डिस्प्ले करते समय आपने लिखा printf %f, a. दैट मींस a का वैल्यू आपको फ्लोट में डिस्प्ले करना है. ठीक है, आपको a का वैल्यू फ्लोट में डिस्प्ले करना है. ठीक है, आपने d के जगह f कर दिया. आपने d लिखना था, आपने d की जगह f कर दिया. इट मींस दैट ऑलरेडी a का वैल्यू, a में जो वैल्यू स्टोर्ड है, इट इज अ इंटीजर वैल्यू. इट इज नॉर्मल इंटीजर, दैट इज 25. बट when you want to print that value, you have printed a float value for a. आपने a में 25 स्टोर करके रखा है, लेकिन उसको डिस्प्ले करते समय आपने क्या किया, उसका फ्लोट वैल्यू प्रिंट किया. तो 25 जो इंटीजर वैल्यू है, इट गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द फ्लोट. यानी a जो ये a का जो 25 वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट होगा. फ्लोट यानी क्या होता है, डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू होता है. It means that when you want to print the value of a in the form of float, so you will get the answer 25.0000. Likewise, that means 0.00 will be appended. Similarly, suppose आपने इंटीजर की जगह यहां पे फ्लोट लिखा है, फ्लोट FLOAT फ्लोट. आपने लिखा फ्लोट 25.77, 25.77. And now this is actually a float value, float a 25.77. You have declared one variable and which is initialized with the value 25.77. That means a is holding the value 25.77. Now suppose if you want to display this value as an integer, आपको उसका integer value print करना है. आपने लिखा %d, a. आपने लिखा %d, that means printf %d, a. That means you are going to print the value of a in the form of integer. भले वो फ्लोट वैल्यू है, लेकिन आप उसका इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो. दैट मींस आपने यहाँ पे %d लिखा हुआ है. सो 25.77 का फिर इंटीजर क्या होगा, ओनली 25 होगा. दैट मींस इंटीजर में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो पॉइंट वाला वैल्यू है, उसके बाद में जो वैल्यू होता है वो क्या कर देगा, क्या देगा उसको, वो जो वैल्यू है दैट मींस वो 77 को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा. दैट मींस वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, एंड डायरेक्टली इट विल प्रिंट 25. यानी a को भले ही आपने 25.77 लिखा हुआ है, बट प्रिंट करते समय आपने उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया है. सो एट द टाइम ऑफ इंटीजर वैल्यू, दैट मींस इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट द इंटीजर वैल्यू फॉर a, सो यू विल गेट द आंसर 25 ओनली. आपको आंसर में क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा, बिकॉज आपने उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया है. सो इस तरीके के जो कन्वर्जन्स होते हैं, इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन. व्हाट यू आर सेइंग, इम्प्लिसिट कन्वर्जन. सिमिलरली सपोज विल से आपने एक इंटीजर, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिखा है, CHAR कैर. आपने कैरेक्टर a लिखा हुआ है, और कैरेक्टर a में आपने एक वैल्यू स्टोर किया है x. आपने एक वैल्यू स्टोर किया है x. इसको सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट कर दिया. दैट मींस x इज अ कैरेक्टर, x अल्फाबेट, x स्टोर्ड इन वेरिएबल a. और a का टाइप क्या है, कैरेक्टर है, और कैरेक्टर a में आपने क्या स्टोर कर दिया, x स्टोर कर दिया. बट इसका वैल्यू आपने इंटीजर प्रिंट किया.
इसका वैल्यू आपने इंटीजर प्रिंट किया, %d प्रिंट किया, %d कॉमा a आपने लिखा। सो व्हाट यू विल गेट, ए में तो कैरेक्टर वैल्यू है, ए में तो एक्स स्टोर करके रखा हुआ है आपने, लेकिन आपने प्रिंट करते समय क्या प्रिंट किया, उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया। तो एक्स का इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा, यू ऑलरेडी नो, बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज हैविंग सम आस्की वैल्यू, हर एक कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है। दैट मीन्स अब जब ये a का वैल्यू प्रिंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, सो यू विल गेट अ इंटीजर वैल्यू एंड दैट इज नथिंग बट द आस्की वैल्यू ऑफ फॉर x। यानी ये अभी क्या प्रिंट करेगा, x का आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा। सो इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होगा कि आपका कंपाइलर विल डू द कन्वर्जन ऑटोमेटिकली, ठीक है। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा statement, extra cast operator to convert the particular data type into the another data type. Your compiler will do the conversion automatically, known as an implicit type conversion. It is also known as an automatic type conversion. Implicit को ही हम लोग बोलते हैं automatic type conversion. So it is done by the compiler on its own without any external trigger from the user. Okay, so it will done by the compiler. Generally take place when an expression more than one data type is present. In such conditions, the type conversion, type promotion take place to avoid the loss of data. That means if you are working on a multiple kinds of data in the same expression, so your type conversion will get implicitly done by or automatically done by your compiler. All the data type of the variable are upgraded to the data type of the variable with the largest data type. That means boolean to character, character to short int, and short into integer. Likewise, after that unsigned into long integer to unsigned. So likewise, we are going to convert the data. Then that should be done by compiler automatically. Okay, there is no need of any trigger from the user. That means there is no need of any extra statement, extra cast operator. There is no need. Okay, so now we'll see one simple example. Integer I is equals to 17. We have created one variable I with the value is 17. आपने I में 17 स्टोर कर दिया. Now character C में आपने एक कैरेक्टर स्टोर किया C. एक C नाम का वेरिएबल आपने बनाया जिसमें आपने क्या स्टोर किया, C ही स्टोर किया. यू कैन स्टोर एनी वैल्यू x y z जो भी आपको लगता है, ठीक है. आपने C स्टोर किया, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव क्रिएटेड वन मोर वेरिएबल इंटीजर सम. नाउ व्हाट यू हैव रिटन, सम इज इक्वल टू I प्लस C. योर I is of integer type, your C is of character type. I का टाइप क्या है, इंटीजर है. C का टाइप क्या है, कैरेक्टर है. आपने एक डेटा इंटीजर लिया है, एक डेटा कैरेक्टर लिया, दोनों को ऐड करना है. एक इंटीजर टाइप का डेटा और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा, दोनों को ऐड करना है. दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है. दोनों डिफरेंट टाइप का डेटा है. C एक कैरेक्टर टाइप का डेटा और I एक इंटीजर टाइप का डेटा है. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल because it is one of the feature which is provided by your C programming. Here implicit conversion will take place. Okay, here अभी क्या होगा, ये I itself integer है, C क्या है, कैरेक्टर है. तो C कैरेक्टर जो डेटा टाइप है, C जो कैरेक्टर वेरिएबल है, उसमें जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. इंटीजर में कन्वर्ट करेगा दैट मींस व्हाट, C में क्या स्टोर्ड है, C में आपका C वैल्यू स्टोर्ड है और C का आपका ASCII वैल्यू क्या होता है, 99 होता है. C का ASCII वैल्यू क्या होता है, 99 होता है. सो 17 प्लस 99 यानी 17 और 99 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और 17 प्लस 99 करते हो, सो यू विल गेट द आंसर 116. 17 plus 99 is 116. So 116 will be stored into the sum variable and finally value of sum is, आपने sum value display किया तो sum में आपका value क्या आएगा, 116 आएगा. Got it? I इंटीजर था, I में 17 था, C is equals to, C में कौन सा कैरेक्टर स्टोर था, C का फिर ASCII वैल्यू क्या होता है, C का ASCII वैल्यू होता है 99. So 17 plus 99 ऐड किया, the value stored or resultant value will get stored into the sum variable. फिर finally you have printed the value of sum और यहाँ पे आपने सम का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया. ओके, सो ये इस टाइप के कन्वर्जन को बोला जाता है नोन एज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ओके, इट विल डू ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट and second one is explicit. That means you are forcefully telling to your compiler you have to change that one kind of data into the another. That means you are forcefully placing the particular cast operator to change the data of one particular variable into the another type. That means higher side data will be get converted explicitly into lower side data.
दैट मीन्स आपका जो भी हायर साइड डेटा होगा वो आप लोअर साइड डेटा में आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हो। दैट मीन्स एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। It will not done automatically by compiler. It is done by the user explicitly. इसमें यूजर खुद बोल रहा है कि हमें ये वैल्यू इंटीजर का कैरेक्टर में चेंज करके दो, कैरेक्टर का इंटीजर में चेंज करके दो, ठीक है। दैट मीन्स it is forcefully asked by the user to convert the one kind of data value into the another. That means the explicit type conversion. So this process is also called as typecasting, and it is user defined. Here the user can typecast the result to make it of a particular data type. User externally, he is going to change the data type with the help of cast operator. The syntax is what? How we are going to change the value? So his syntax is what? In brackets you need to write down the type. So type can be anything, integer, character, float, double, single, whatever, जो भी आपको लिखना है. So instead of expression, ये जो भी expression होगा, that expression will get converted into that particular type value. That means suppose यहाँ पे आपने ऐसे लिखा है integer, यहाँ पे लिखा है C and now C. Suppose ये C का डेटा टाइप है आपका कैरेक्टर. C का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर. Suppose now C is a variable of character type. Now what you are going to do? आप फोर्सफुली बोल रहे हो कि C का जो डेटा है, C में जो भी डेटा है उसका आपको किसमें कन्वर्जन करके चाहिए, उसमें उसका आपको इंटीजर में कन्वर्जन करके चाहिए. That means you are forcefully telling to your compiler you have to change the data type of existing variable into the another type. That means अब ये C का डेटा टाइप मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है. So what I should write down in the square in the circular bracket, I have to give a data type name. That means C जो वेरिएबल है उसका मुझे किसमें कन्वर्जन करके चाहिए, उसका मुझे इंटीजर में कन्वर्जन करके चाहिए. That means the explicit type conversion. So here we'll see the one example. So integer sum is 17. Sum का value 17 है. Count is equal to 5. Sum में 17 है, count value is 5. Now double mean. एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है mean नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है. Okay. Now mean is equal to sum divided by count. Mean is equal to sum divided by count. But before sum के सामने क्या लिखा है, ब्रैकेट में डबल लिखा हुआ है. That means first of all your sum value will be converted into the double. First of all your sum value will be converted into the double, which is divided by count, and count value is 5. That is whatever will be the sum value converted into the double will be converted into double. After that it is divided by count. Count is nothing but your 5. Okay, that means 17.000 divided by 5. So whatever value you will get will be stored into the mean. That means you are telling to your compiler forcefully you have to change the data type of sum into a double. By default the data type of sum is integer, but here you are going to change the data type of sum into double first. That means sum की जो भी वैल्यू होगी वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी. That means वैसे 17 है तो 17 का डबल 17.0000 होगा, ठीक है. And after that it is divided by 5. Whatever the result will come stored into the mean. That means the mean value is 3.40000. That means आपके mean में value क्या आ जाएगा, 3.40000. That means it should be noted here that the cast operator has precedence over a division. So the value of sum is first converted into the type double, and finally it gets divided by count, yielding a double value. So time conversion can be implicit, which is performed by compiler automatically, or it can be specified explicitly through the use of cast operator. Okay, so that means we can do a casting in two different ways, implicit and explicit. Implicit में compiler will convert the data type, one data type into the another data type, that is implicitly. That means compiler will do automatically the type conversion, but explicitly, in which the user can forcefully telling to the compiler he has to convert the one particular data type into the another data type. Okay, so that means the explicit flexibility in the code. Now